Last week, especially last 7 days, it has been a great week for entire Bitcoin community. It has gained over 21.70%, almost 22% gain in last 7 days. तो क्या volatile? ये वो फर्स्ट लव जैसा है, जाएगा आएगा आएगा जाएगा. तो द ओनली बेस्ट एडवाइस इज टू कीप टेकिंग योर प्रॉफिट अलोंग द वे. छोड़ के मत रखो कुछ भी, क्योंकि ये एक रैली है, कभी भी टूट सकता है नीचे की तरफ एंड यू विल एंड अप लूजिंग ऑल ऑफ योर गेन्स. पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. सो इट्स बीन अ ह्यूज गेन सिंस लास्ट 7 days, बट व्हाट इज कमिंग फॉर दिस रिसेंट वीक? आने वाले हफ्ते में क्या क्या होने वाला है एंड व्हाट आर द लेवल्स वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंस बिटकॉइन स्टार्टेड अ वेरी ग्रीन पॉजिटिव रैली. So this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. Before I go forward, smash onto the like button to a new all-time high. Subscribe this channel to stay profitable, stay updated. Be a part of our Twitter and Telegram handle where we post all the trade-related update whenever we need. See again, I don't believe in like trading all the shit you can. I only trade once and that can make you 200 to 300% money with 200% guarantee. If we give a close look to this chart, one day candlestick chart, from started back in mid of June, तो ये जो upward channel था, then finally we broke below this upward channel support line back in 19th of August. Now, आज का डेट है September 12th and we are gradually approaching towards the previous support, recent resistance of the upward channel. तो इसका मतलब क्या है? ये जो नीचे का जो सपोर्ट लाइन था अपवर्ड चैनल का, रिसेंटली वो एक रेजिस्टेंस लाइन है. सो जब बिटकॉइन का प्राइस बैक इन अगस्त 19th पे ये सपोर्ट लाइन मिस किया था, उसके बाद द लोएस्ट प्राइस वी हैव रिकॉर्डेड समवेयर अराउंड 18,500. 18,500 के बाद we have gained 21%, but the recent resistance which is waiting between 22,500 से लेके 23,000. So what are the possibilities over here? तो इधर दो possibilities बनता है. First, Bitcoin may get reject from this 22,500 से लेके $23,000 के बीच में. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रेट लाइन वाला एक रेजिस्टेंस लाइन है. देन जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है विच इज दिस प्रीवियस चैनल का सपोर्ट लाइन. एंड आई ऑलवेज बिलीव, मैंने इससे पहले भी बहुत बोला है, स्ट्रेट लाइन से ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसका स्ट्रॉन्ग होता है जिसका ये डायगोनल लाइन आता है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके जो लाइन ऊपर या नीचे की तरफ आता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है. एंड आई एम क्वाइट वरीड अबाउट दिस 22,500 एंड 23,000 के बीच का जो गैप है. I am quite worried about this point. Maybe Bitcoin start getting accumulating between this 22,500 से start करके 23,000 के बीच में. Then eventually Bitcoin may test 20,500 or 21,000. So that is the scenario 1. Now what is the scenario 2? Scenario 2 is very, very optimistic. Let me tell you. So now the scenario number 2, which is again very interesting. So I'm expecting, there is nothing wrong in expecting, and I'm sure that this can happen, but not possible though. So the scenario number 2 is getting rejected by this $23,000 recent resistance, then small pullback, and just after getting this small pullback, a strong rally towards like 25,000 and 24,000. So it can be like a rejection first from 23,000, then a small pullback, then a strong rally, get support, eventually get support above this $23,500, then eventually testing the $25,000 rejection line once again. Why 23,000 rejection line once again? Because इससे पहले भी Bitcoin got rejected by this $25,000 and maybe this time it can get through $25,000 and eventually it lands above $30,000. It can be anything. So the optimistic view is to go above $25,000, but the realistic view to get a rejection from 23, then pull back till 20,000, then make a long entry and wait for it to reach $25,000. So let me know in the comment box के what do you think about this, assessment. क्या हो सकता है in decent days?
Now some geopolitical news which can influence the market, since we all know कि Bitcoin, S&P 500, Nasdaq, they are just brother from another mothers. So recently USCP is coming on this next Tuesday. And at the same time, जो USCP का RSI line है and the rejection line है, which actually influence the S&P 500 market. So we have a small data here where we can see. So ये जो नीचे वाला line है, हम सब के heart rate के जैसा, वो है RSI. Just check all those yellow circles. It means RSI hit the extreme level. So now come at this extreme left side, जो recent situation है. तो उसपे हम लोगों को क्या दिखाई देता है? CPI is touching 8.50 and also RSI is going above 80% and it's been almost 6 months. So just check जो पहले का जितना भी रेड लाइन्स है, जब RSI 80 का अबव गया है तब मार्केट गंदा क्रैश हुआ है. Just look at all these datas. तो नीचे जो ये स्ट्रेट एक S&P 500 का लाइन है और ऊपर CP का लाइन है. Every time CP and this RSI touch its highest point above 80, मार्केट बुरी तरीके से नीचे गिरा है. At the same time CP भी बुरी तरीके से नीचे गिरा है. तो जैसे कि बोला था, बिटकॉइन का पता नहीं, बट स्टॉक मार्केट अभी जो पोजीशन, अभी जो सिचुएशन है, उधर से सिग्निफिकेंटली लाइक 60 to 70% नीचे आ सकता है. इट्स नॉट माई वर्ड. The entire world, like all the other great economists, strategists, they believe कि market मतलब at least S&P 500 and Nasdaq अभी जिस position में उधर से 60 to 70% नीचे गिर सकता है. So don't know what's going to happen, but something is definitely going to happen. Because we have enough proof of that. जिसका और एक proof recently कैसा arbitrage जो trading होता है ना, वो कैसे geopolitical market पे काम आता है. Let me give you an example. So रशिया ने जो biggest pipeline है, मतलब रशिया and Germany and Europe के बीच में वो biggest pipeline भी बंद कर चुका है. So now first Russia choked 60% of their supply. Now they have choked like almost everything. Maybe few little bit, like 25% is still running. Other than most of it's choked by Russia. Russia actually wants to punish Europe because of this recent sanction on Russia. So now what is happening right now? तो रशिया का जो गैस है उसका one of the biggest exporters is China. तो चाइना का रिसेंट जीरो कोविड पॉलिसी चल रहा है, उसके चलते बहुत जगह में अभी भी लॉकडाउन, लसन वगैरह, एकदम बहुत ही बुरे हालत है चाइना का. सो क्या हो रहा है, चाइना ने जो स्टॉक लिया था रशिया से, नेचुरल गैस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, क्रूड ऑयल, सब कुछ का, वो तो अनयूज्ड रह गया है क्योंकि उतना ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहा है, उतना ज्यादा यूजेस नहीं हो रहा है. तो क्या हो रहा है, तो रशिया का जो गैस डायरेक्टली यूरोप के खाते में जाना चाहिए वो चाइना के खाते में आ रहा है. एंड चाइना इज आर्बिट्राइजिंग. चाइना वो ही गैस, रशिया का ही गैस घुमा के यूरोप को बेच रहा है डबल प्राइस में. तो दिस इज कॉल्ड द आर्बिट्राज ट्रेडिंग. तो इसमें गेनर्स कौन है? चाइना. लूजर्स ऑलवेज यूरोप. तो यूरोप को गैस चाहिए अभी क्योंकि विंटर आ रहा है. रशिया ने अपना 80% स्टॉक बंद कर दिया है एंड चाइना इज टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रिंट सम बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी, क्योंकि वही गैस जो 5 रुपया में खरीदता है रशिया से, एंड प्रोबेबली रशिया वो गैस यूरोप को 4 रुपया में बेचता है. अभी यूरोप को वही गैस 10 to 12 रुपीज में खरीदना पड़ रहा है घुमा के चाइना के पास से. इसके चलते जो गैस इन्फ्लेशन है, जो प्राइस इन्फ्लेशन है, इसीलिए डबल है. पब्लिक में जो इनसिक्योरिटीज है वो भी डबल है, जो पैनिक है वो भी डबल है. एट द सेम टाइम मार्केट में भी वो पैनिक है. चाइना, यूरोप, यूएस, चारों तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस. It will definitely influence the market. Don't know when, how, where, but it's going to happen. Make sure you are fully armed this time. Make your own game plan, make your own exit plan. That's all from my side, guys. Thank you for watching. I've done my part. Do your own part. Like, comment, subscribe. Be a part of our Twitter handle, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dave signing off.